Good evening, everyone. I am Animesh Sharma, and today let us learn something about inflation. तो exactly inflation है क्या? आइए पहले तो definition देखते हैं. So the definition is inflation is defined as a situation where there is a sustained, unchecked increase in the general price level and a fall in the purchasing power of money. Hence, it is a condition of price rise. तो ये एक जेनरिक डेफिनेशन है जहाँ पे इट इज टेलिंग कि एक सस्टेन्ड इंक्रीज हो रहा है प्राइस में एंड सिंस प्राइस इंक्रीज हो रहा है सो परचेजिंग पावर डिक्रीज हो रही है. सो लेट अस सी इट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज एक आइटम है ए जो कि आपने 100 रुपीज का लिया, दैट इज एज ऑफ टुडे यू टुक इट एज 100 रुपीज. सो आपको क्या लगता है आज से एक साल बाद 2025 में विल इट बी ऑफ द सेम कॉस्ट? नो, डेफिनेटली नॉट. सो डेफिनेटली इट विल बी मोर देन 100. तो मे बी ये आइटम हो सकता है 110 का हो जाए. तो हम एज्यूम करते हैं कि आज जो आपने आइटम 100 रुपीज का लिया था वो 2025 में 110 रुपीज का हो गया. सो यहाँ पे ये जो 10 रुपीज इंक्रीज हुआ दैट वी कॉल एज इन्फ्लेशन एज 10%. सो सपोज यहाँ पे वो आइटम 120 रुपीज का हो गया होता तो यहाँ पे सेम थिंग वुड हैव बीन 20% इन्फ्लेशन. बट हमेशा इन्फ्लेशन काम नहीं आता. इन्फ्लेशन इज ओनली देयर मोस्टली in healthy economies or growing economies. But suppose we have deflation. Now what is deflation? This 100 रुपीज आइटम जो आपने आज 100 रुपीज का लिया था सपोज इन 2025 वो 90 रुपीज का हो जाए, उसका प्राइस गिर जाए. सो नाउ वी विल से दैट deflation will be equal to 10% बिकॉज उसका आइटम आज 100 रुपीज था, आज से एक साल बाद वो 90 रुपीज का हो गया तो उसकी वैल्यू गिर गई. परचेजिंग पावर यहाँ कैसे शो अप होता है? सो दिस आइटम वॉज 100 रुपीज, आज मैं इसे 100 रुपीज दे के खरीद रहा हूँ, मेरे जेब में एक 100 रुपीज का नोट है जिससे मैंने ये आइटम ले लिया. नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर आई हैव परचेज्ड इट? सपोज अगेन आई एम गोइंग टू बाय द सेम आइटम नेक्स्ट ईयर इन 2025. फॉर द सेम आइटम आई विल बी गिविंग 110 रुपीज. सो व्हाट हैपेंड? My purchasing power reduced. I am giving 10 rupees extra for the same thing. So that is why purchasing power reduce होती है जब भी inflation increase होता है. So this is an example, simple example of inflation. Now let us see what are the types of inflation. Types क्या क्या हैं? So types में सबसे पहले आता है आपका creeping inflation. As the name suggests, very slow, mostly in single digits. 1% का 2% का inflation होगा, maybe 0.5% होगा. Creeping, very slow inflation. Next comes galloping inflation. As the name suggests, it is jumping. It is in 2 digits, maybe 50%, 60%, like that. Most dangerous of them is hyperinflation. In this, what happens? The inflation goes up exponentially high, maybe up to 1,000,000 times. Million times. And this happened in Venezuela. So what happened in Venezuela? जो आपका इन्फ्लेशन था it turned into hyperinflation एंड आपके जो प्राइसेस थे इट वेंट अप बाय मिलियन टाइम्स. तो वहां पे एक ब्रेड पैकेट खरीदने के लिए दे वर सेइंग दैट पीपल वर टेकिंग होल बोरे भर भर के, दे वर टेकिंग बैग्स ऑफ मनी just to get one packet of bread. And the government, what it did, it printed a $1 million note. So just imagine the government itself printed a $1 million note. So that is the situation of hyperinflation. In India, how do we measure inflation? So there are basically two indices. One indices, number one is WPI and one is CPI. WPI is wholesale price index, that is at the wholesale level, at the factory level. It hasn't entered into the market. कोई product बना, वो market में आया नहीं, वो product बन के ready होके factory में, now it is ready at the wholesale level. That is measured at the wholesale price index. अब वही सामान या कोई और सामान जब हमारे मार्केट में आ जाता है, when it enters into the market and it reaches the consumer, that is me and you, then it is measured at consumer price index. Now currently this is the main
indices which the government of India uses. That is the CPI for measuring the inflation. So that is all about types of inflation and inflation. Hope you like the concept. Thank you.